Hello. Good evening, Mani. Good evening, everybody. Yes, Anubha, not only today we will cover, I think, only 2 articles probably, because we have something else also lined up. Okay, so one more program is going to start today. So today we will be covering 2 articles. Okay. Hello, good evening, everybody. Good evening. Okay. So let's start with the first article. Agriculture needs research focus. Okay. Agriculture, if you will see UPSC's syllabus, there are 3 chunks. You can say 2 chunks. One is food processing, so that is agriculture and manufacturing sector combined. Okay. So the 2 parts of the syllabus is completely dedicated to agriculture and related portion. And within that, one consistent theme is how to increase productivity. Okay, how to increase productivity, and of course, you know that one of the thing is research. So before again, as we do, before going into the article, let's see the basic funda. Basic funda क्या है कि we know already that population of India is increasing at around 1%, bit less than 1% per annum. Okay, hello. So okay, so population of India is increasing at that rate. Okay, so 2011 census said that population growth rate is 1.6% per annum. Okay, so this is population growth rate of India as per 2011 census. More close to our time in 2023 again, but this is not the government data because we are yet to conduct census after 2011, but the 0.7% per annum. There is World Population Atlas. World Population Atlas says that it's happening here. Okay, link of PDF on YouTube, Ganesh. Yes, if anybody is watching it, please share link of the document on YouTube also, because people on YouTube are asking for the document. Okay. Yes. So somebody please. Okay. Wait for a second. 1 minute wait kar lijiye. I'll just. Okay. Article. Just give me a second. Okay. So article will be shared, I think, just in a while. So the funda is keep population of India is increasing still, and what we have to do, so for in order to live at least as we are living right now, we have to increase production of food. We have to increase production of food. If we have to increase production of food, what are the ways? Different ways you can do that. How you can increase production? अगर आपको ओवरऑल में प्रोडक्शन बढ़ाना है, यू कैन डू इट इन 2 ways रफली. मतलब इफ वी सी ब्रॉडली, एक तो क्लियर है कि जैसे अगर आपको पढ़ाई का आउटपुट बढ़ाना है, एक तो आप घंटा बढ़ा दो, कितने घंटा पढ़ रहे हो, दूसरा फोकस बढ़ा दो, कैपेसिटी, मतलब हाँ, मतलब कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ, एक तो रीडिंग आवर अगर हम पढ़ाई की बात करें, और सेकंड इज कि यू इंक्रीज फोकस, देन मे बी इन लेस आवर्स ऑल्सो यू कैन मैनेज. Similarly, if you want to increase production of agriculture, one is either you have to increase the land area under agriculture. Okay, that is the arable land that we have to increase. That's one. Second is you have to increase productivity, that per land how much you are doing it. Okay, so that is called yield. So increasing production is either to increase arable area and or increase productivity. Now, how you will increasing arable area now is mostly not very much possible in India, because our population is still increasing. So it's not very feasible. Even if we will be able to increase some area, that will be very marginal increase. We cannot significantly increase area under agriculture. That is not possible now. Now, whenever we increase, say if we will increase area under millet, we will have to reduce area under rice. So we can do rearrangement
but overall area, that is not much possible. That means if we want to significantly increase production of agricultural products, we have to increase productivity. There is no other way. Productivity means more production from same area. Okay, but we call it as a yield. We have to increase yield. If we can do that, then again production will increase. How we will increase productivity? If you want to increase productivity, what actions you think should be taken? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सेम आपका जमीन फिक्स है और उसी में से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो व्हाट एक्शन यू थिंक कैन शुड बी टेकन? टेक्निक्स चेंज करना होगा. मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यू हैव टू अडॉप्ट. यस, ओके, एनीबॉडी एल्स? कैश क्रॉप उसका रेट अच्छा होता है, तो दैट, हाँ, मतलब एग्रोक्लाइमेटिक जो पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन का है उसको आप करेंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. जैसे कि शुगर केन, अभी विदर्भ में शुगर केन उगा रहे हैं तो वो काम नहीं करना है. दैट्स वन थिंग. सी, शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सबसे पहला सीड जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होना चाहिए. ठीक है, तो HYV सीड्स होना चाहिए. सिमिलरली जब प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना है, वाटर इफिशियंसी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अगर कम वाटर से आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे? फॉर दैट अगेन यू हैव टू अडॉप्ट से माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिसेस. ओके, यू हैव टू फोकस ऑन प्रेसिजन फार्मिंग. प्रेसिजन फार्मिंग मीन्स अगेन, हाँ, सॉइललेस, राइट. But hydroponics and all, they are still not at that scale where we will increase production all over India. But these are at, हाँ, नहीं बचता है, बट स्टिल अभी कॉस्टली है और वो अभी मतलब क्या कहा जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज पर ज़्यादा है. मतलब आप गांव में ऐसा नहीं देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स हो रहा है, या फिर अगर आप करना भी चाहेंगे, इट विल टेक टाइम, मनी, ट्रेनिंग फार्मर्स. ओके, सो दैट इंडीड इज वन ऑफ द एरियाज पॉसिबल, बट दैट्स मोर फ्यूचरिस्टिक. ओके, तो अल्टीमेटली एक चीज़ ये है कि यू हैव टू focus on research. Okay, if you want to have high yielding variety seeds, you have to focus on research. If you want to increase production per unit of water, you have to focus on research. ठीक है, precision farming, like कि आप exact किस time पर fertilizer use करना है, exact किस time पर water देना है. Normally farmers use their intuition because they have been doing it for years, decades, for generations they have been doing it. So they have a gut feeling. They can see some parameters and they can think that. But precision farming says that there is an exact time, and then from satellite they see the changes in parameter, like say soil moisture change. So when that soil moisture reaches a particular level, they will apply water. So all these things require investment in research. So if you want to increase productivity, one major thing is increasing R&D. Okay. Apart from that, of course, if you want to increase productivity, you have to invest in infrastructure. Okay. In infrastructure, if you will if you will build irrigation infrastructure, it has been repeatedly seen that more than I think about 50% of India's total arable land is unirrigated. That is rain-fed. Okay. So if you are doing that rain-fed farming, then the productivity is less. So one way to increase productivity in those areas, particularly in Indo-Gangetic zone, is to increase the irrigation potential. How you will do that? By increasing the irrigation related infrastructure, maybe building canals or drip irrigation, whatever. Okay. So the second is building agri infrastructure. Particularly related to irrigation. See, point is, the moment you understand कि productivity बढ़ाने के लिए क्या सब करना है, आपके दिमाग में 4-5 पॉइंट होने चाहिए और हर पॉइंट का 1-2 आपके पास डेटा होना चाहिए. ठीक है,
उसके बाद आपका काम हो गया। क्वेश्चन जब भी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड आएगा तो आपके दिमाग में भरा हुआ है, सीधे वो आपके पेज पे आएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू इंटर इनटू सो मच डिटेल, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं यू हैव टू रिमेंबर कि अल्टीमेटली यू हैव टू राइट आंसर इन 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, ओके। तो दैट इज अ बिग लिमिटेशन, और दैट इज यू कैन यूज दैट फॉर योर एडवांटेज कि आप कितना अंदर घुस के पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज पीपल आर डूइंग 5 year 6 year PhD ऑन एवरी ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो यू कैन नॉट कम्पीट विथ देम ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ओनली। तो आपको देखना है कि लिमिटेड कितना रहे जो कि आप पेपर में 100 वर्ड 150 वर्ड में लिख दो, ठीक है। तो दैट इज द कोर स्ट्रेटजी, ओके। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यू हैव टू इंक्रीज रिसर्च, यू हैव टू build infrastructure, and the third point is you have to invest in human capital, right? Human capital means our farmers are not yet trained mainly, they have been following the traditional practices, okay. So if you want them to adopt modern practices, there is lots of resistance among them in adopting modern practices because they don't know much about it, they are skeptical ki kya hoga, risk kya hoga, okay. So when they are not adopting modern practices, it does not mean they are irrational, it's just that they don't know, okay. So you have to train them, that is, so increasing productivity. Third point is increasing training programs for farmers, okay. So these are the three main things, all other points will come under one or two of this, okay, okay. So if you want to do this, it's this. Now this whole article is about agriculture research. They will start with the need कि पहले इस आर्टिकल में स्टार्ट का जो 3-4 पारा है, 1 2 3 4, स्टार्ट के 4 पारा में the author will talk about the need of food security, that why food security becomes more important in current times, and then author will say that how productivity can be improved, and then author will say कि why research is important and what India is doing for research, okay. हम लोग हमारा भी status क्या है, that is the article, okay. Let's have a look at it. Okay. Okay. So this whole thing, they will talk about need for food security in India. Okay. So the first time since the Green Revolution era, India is staring at a contracting supply of food grain and an uncomfortable reality of food insecurity. Okay, wait, let me adjust it. Okay, दिख रहा है? Okay, first para hai, okay. So the first time since the Green Revolution era, India is staring at a contracting supply of food grain and uncomfortable reality. Although the country's granaries are brimming and food grains and horticulture products are at a record level, climate change induced weather variability is taking a toll. मतलब घुमा फिराकर बात ये बस ये बोल रहा है कि हमारे पास अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा ड्रॉट आ जाएगा तो हमारे पास फूड ग्रेन नहीं है. दैट सिचुएशन इज येट टू कम, बट द फूड सप्लाई इज कॉन्ट्रैक्टिंग, which is visible in the steps taken by the government, like सरकार wheat export पर बैन लगा चुकी है, राइस एक्सपोर्ट पर कभी बैन लगाती है फिर बैन हटाती है, शुगर केन सप्लाई पर शुगर सप्लाई पर बैन लगा हुआ था. तो ओवरऑल थिंग इज कि वी आर नॉट दैट मच फूड सिक्योर एज वी यूज्ड टू बी few years back, okay. So that is the point author is trying to make, and one of the reason for that is climate change induced weather variability. ठीक है, तो because of climate change the rainfall is not happening at time, the temperature is increasing and decreasing without any predictable pattern. So because of all these things there is this danger that we may become food insecure in times to come. ठीक है,
तो एक अलग से ऐसे है कि ये क्लाइमेट रिसाइलिएंट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेंस के लिए। इसमें डिटेल में इसका बात नहीं हुआ है, जस्ट टेलिंग यू साइडवेज कि क्लाइमेट रिसाइलिएंट एग्रीकल्चर मे बी सम टाइम लेटर जब इस पर आर्टिकल आएगा तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, second para, the discourse on imminent food insecurities and awkward truth, the policy action of restricting stockpiling, imposing export duty, reducing import tariff and banning export of agriculture commodity from rice to sugar threaten the food security. Okay. सेकेंड पारा बहुत छोटा सा पारा लगता है, ठीक है, इट्स हार्डली 1 2 3 लाइन्स, ठीक है, बट इस पारा का एक एक पॉइंट जो है पर्टिकुलरली सेकेंड लाइन का पॉलिसी एक्शन ऑफ restricting stockpiling, imposing export duty, reducing, all these things tells you about the action taken by the government to deal with food inflation in India. Okay, तो कभी मेंस में maybe they can ask you a question कि what steps have been taken by the India to deal with food inflation. Okay, तो इसमें आपको आंसर भले ही 150 वर्ड में लिखना होगा, बट पॉइंट्स यही होंगे जो ये सेकंड लाइन में लिखा है, सारे पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करके आपका आंसर बन जाएगा. सो सेकंड पारा इज वेरी इंपॉर्टेंट पारा. ठीक है, अब एक एक एक्शन को देखते हैं. पॉलिसी एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग स्टॉक पाइलिंग. ओके, सो इवन नाउ रिसेंटली इंडिया हैव रेस्ट्रिक्टेड द स्टॉकिंग ऑफ व्हीट. ओके, स्टॉक होल्डिंग को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब कि इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन how much grain they can store at their storage. If you are a say shopkeeper or if you are a food processor, you will want to have a stock of food grains with you, right? But then how much you can store? If you have money, maybe in normal times you can store as much as you want. But in times when government enforces Essential Commodity Act, government will limit the quantity which you can store. ठीक है, लेट्स से कि 100 टन बोल दिया, रेंडमली बोल रहे हैं कि 100 टन बोल दिया, तो यू कैन नॉट स्टोर मोर देन 100 टन. ओके, बियॉन्ड दैट जो है आप स्टोर नहीं कर सकते, दैट विल बिकम इलीगल. ओके, व्हाई गवर्नमेंट डज दैट? एनी आइडिया? स्टॉक पाइलिंग से क्या होगा? स्टॉक पाइलिंग पर रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट को चाहिए, राइट? राइट, वो पॉइंट तो है, डिजास्टर वाला वो एक उधर का पॉइंट है कि गवर्नमेंट को खुद भी अपना एक स्टोरेज बफर स्टॉक बना के रखना होता है. ठीक है, तो बफर स्टॉक तो अभी गवर्नमेंट के पास है. ओके, यू हैव राइट पॉइंट, बट यहाँ पर ये एक बफर स्टॉक है अभी गवर्नमेंट के पास. बट इन जनरल एक क्या होता है कि इन्फ्लेशन दो कारण से हो सकता है. एक तो सप्लाई अगर कम हो जाए, दूसरा डिमांड अगर बढ़ जाए. ठीक है, यहाँ पर क्या है, फूड इन्फ्लेशन का एक बड़ा चीज होता है सप्लाई रेस्ट्रिक्शन, सप्लाई कम हो जाए. एक प्रॉब्लम सप्लाई कम होने का डर ये रहता है कि जो स्टोर करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं कि अगर उनको लगेगा कि फूड प्राइसेस बढ़ रहा है तो वो और भी स्टोर करके रख लेंगे, सो दैट कि और स्कार्सिटी होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, और फिर जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो देन वो बेचेंगे. ठीक है, तो इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट ये काम करती है कि स्टॉक पाइलिंग को का लिमिट लगा देती है. ठीक है, तो ये काम होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत. ओके, जो कि आपको कोविड के टाइम में मास्क और इस सबको भी इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया था. सो फॉर दैट पर्पस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स यू कैन स्टोर, प्लस प्राइस भी कभी कभी कंट्रोल कर सकती है. तो रेस्ट्रिक्टिंग स्टॉक पाइलिंग टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, इम्पोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट ड्यूटी पर इंक्रीज जो है, अगेन इट इज फॉर द सेम थिंग. ओके, यस सुमित, यू आर राइट. ओके, increasing export duty again for same thing कि if you are exporting product to other countries, while if government fears that the domestic supply is less or domestic supply may reduce in times to come, then government will try to ensure that food is available to the domestic consumers more, and then only if there is something surplus, then it will go to other countries. So to ensure that, government impose export duty.
एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने का क्या मतलब हो गया कि अगर 50 रुपये किलो चावल बिक रहा है इंडिया में और वो 50 रुपये एक्सपोर्ट प्राइस है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि यू हैव टू गिव 40% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 50 रुपया प्लस इसका 40%, ठीक है। तो दैट यू हैव टू डू, तो आप 70 रुपये में बेच पाओगे। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइस so that your product will be less in demand in foreign country. Why so? Because that way if your product is less in demand in the foreign country, domestic producers will be forced to sell in the domestic market only. बाहर में उसका सामान बिकेगा नहीं क्योंकि महंगा हो गया because of export duty, तो फिर वो अपने ही कंट्री में उसको बेचना पड़ेगा। This is again to safeguard interest of producers or consumers. एक्सपोर्ट ड्यूटी विल सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। किसका इंटरेस्ट सेफगार्ड करेगा? अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो प्लस जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोड्यूसर को नुकसान होगा ना, क्योंकि प्रोड्यूसर तो चाहेगा कि सस्ते प्राइस पर अगर वो उसको एक्सपोर्ट में बिक रहा है तो वो एक्सपोर्ट में बेचे। इंडिया में 50 रुपये बिक रहा है, अगर फॉरेन कंट्री में 60 रुपये भी उसको मिल रहा है तो वो तो बेचेगा, उसको प्रॉफिट है। बट अगर वो 60 रुपये फॉरेन कंट्री में बेचेगा तो इंडिया का प्राइस भी स्लोली इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। सो इम्पोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैरिफ। ओके, थर्ड पॉइंट इज अगेन टू डील विथ इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। सपोज इंडिया में फीड का सप्लाई कम हो गया, देयर इज टू वे टू इंश्योर कि सप्लाई कैचअप करे। वन, यू विल इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर, and the second is you will incentivize foreign producers to sell in your market. कि अगर सप्लाई व्हीट का कम है या किसी भी प्रोडक्ट का कम है तो आप बोलोगे कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स को बोलोगे कि आप बेच लो। वो क्यों बेचेगा आपके पास? अगर उसको आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो फिर उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। लाइक वी डू ऑन ओनियन, ओनियन का स्कार्सिटी हो जाता है, ओनियन का प्राइस 100 रुपीज़ kg जब बिकने लगता है तो हम पाकिस्तान से भी ओनियन मंगाते हैं, ठीक है, और उसको जीरो ड्यूटी कर देता है। तो ऑल दीज आर द स्टेप्स गवर्नमेंट टेक्स टू डील विथ फूड इन्फ्लेशन। इसके बाद भी बैनिंग एक्सपोर्ट, एवरीथिंग, 1 2 3 4 पॉइंट है यहाँ पर। तो ऑल दीज एक्शंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विथ फूड इन्फ्लेशन। ओके, बट द प्रॉब्लम इज all these steps are good for consumers, but it disincentivizes producers because producer is not able to, okay, so all these steps disincentivizes producers, okay, because producers are not able to take advantage of high prices. Producer तो चाहेगा कि जितना हाई प्राइस हो उतना अच्छा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर अगर डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, अगर कोई फार्मर को पता है कि द मोमेंट व्हीट प्राइस एक लेवल से ऊपर हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी घटा देगी, फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो है वो इंडिया में आके बेचेगा। मतलब इट इज टेलिंग फार्मर कि योर प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड एट ए हायर प्राइस। दैट मीन्स फार्मर विल हैव लेस इंसेंटिव to invest in agriculture, okay, and that disinvestment to the, that disincentive to the farmer may lead to food insecurity for the people, because if farmers will not have incentive, they will not invest much. Maybe people will move out of farming, which is actually happening, okay, so that can lead to food insecurity, okay. Moreover, then, okay, third para, moreover, the narrowing agriculture trade surplus, export-import imbalance, galloping import of food items from edible oil to pulses, increased demand for import of animal food, okay, all these things. इसमें वो क्लियर, इस वाले पैराग्राफ में वो ये बोल रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस जो है दैट इज डिक्लाइनिंग, ओके। थर्ड पारा अलग है, ठीक है। सेकंड पारा वाज डीलिंग विद फूड इन्फ्लेशन एंड हाउ, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट टेक to deal with that and how it disincentivizes. Third para में the concern is कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सरप्लस है वो रिड्यूस हो रहा है। इंडिया हैव बीन ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सिंस 1991 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1991 ऑनवर्ड्स कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर कि नेट में हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लाइक हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर 100 रुपया का एक्सपोर्ट कर रहे हैं
50 रुपया का इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स नेट हम लोग 50 रुपीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइट, बट द सरप्लस is reducing, the narrowing agriculture trade surplus, export import imbalance is happening, okay. Our export is increasing at slower pace while our import is increasing at higher pace. Why our import is increasing at higher pace? Most highest imported product क्या है हमारा एग्रीकल्चर का? सबसे ज्यादा हम लोग import क्या चीज करते हैं? Yes, Ganesh, you are right. तुक्का मारिए, just take a guess. सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? सीड्स, ओके, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ऑयल सीड्स, ठीक है, हाँ, एडिबल ऑयल, ठीक है। एडिबल ऑयल हमारा नंबर 1 इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल आइटम है, नंबर 2 पल्सेस है, ठीक है। तो बोथ एडिबल ऑयल और पल्सेस के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करता है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ये बढ़ रहा है। तो गैलोपिंग इंपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एडिबल ऑयल टू पल्सेस टू इंक्रीज डिमांड फॉर द इंपोर्ट ऑफ एनिमल फीड, ओके। तो थर्ड पारा का जो सेकंड है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंपोर्ट फॉर एनिमल फीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द सेंस कि अभी तक ये देखा जा रहा था कि जनरली वी आर importing more for human consumption, but now slowly we are moving to such a time where we have to import more products for animal feed, okay, be it alfalfa grasses, okay, or be it maize based ethanol products, ठीक है, soybean grains, okay, all these things we are importing for animal feed. So our import of human consumption related material is increasing, and at the same time our import of material for livestock consumption is also increasing, and the net effect is our import of agricultural produce is increasing, ठीक है, okay, ये वाला भी वही है। Fourth para is also same thing. In addition to feeding Indians with imported palm oil, soybean oil, all these things, time has come to feed the Indian cattle and buffalo population with imported alfalfa hay. Alfalfa is a gas वो भी, okay. फोर्थ पारा में एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से कि इस बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ओके। इन एडिशन टू फीडिंग इंडियंस विद इंपोर्टेड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लेंटिल, पिजियन ऑयल, चिकपीस, वाशिंगटन एप्पल, okay, Washington apple. So anybody remember the question which was asked in 2024 prelims? Okay, 2024 prelims में, okay, let me give 10 seconds to online guys, those who want to write, okay. Type of peas, नहीं, type of peas था, that's right, okay, but वो more biological question था। हाँ, type of peas वो तो एक, हाँ, वो एक question था, हाँ, but that's more वो biology वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था कि इंडिया डू नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट था 2024 के प्रीलिम्स में, इंडिया डू नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए, ओके, कि एट ऑल एकदम करता ही नहीं है। दैट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स वाज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट वाज रॉन्ग। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वाशिंगटन एप्पल जो है वो इंडिया में बिकता है, ठीक है, और जिसका कि इंपोर्ट बढ़ रहा है, बढ़ गया है, ठीक है। दैट मीन्स वो स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत था, तो ठीक है। इन एडिशन टू फीडिंग इंडियंस विद दिस, ओके, द टाइम हैज कम टू फीड द इंडियन कैटल एंड बफेलो पॉपुलेशन विद इंपोर्टेड अल्फा हे, ओके। दिस इज अ स्टार्क रियलिटी ऑफ एग्रीकल्चर टुडे which is concealed in the laurels of the past, okay. In fact, agriculture research in India is stuck in sloganeering of the green revolution era of 1960s and 70s. बोल रहा है कि अभी तक एग्रीकल्चर रिसर्च की जब भी बात होती है, whenever we talk about success of agriculture research in India, we still quote हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, बट उसके काफी टाइम हो गया, 60s काफी टाइम हो गया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट अब खत्म भी हो रहा है, अब उसका टाइम जा रहा है, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑथर जो है वो गियर चेंज करेगा। तो अभी तक बोल रहा था कि हमारी समस्याओं को गिना रहा था, अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन रिसर्च है और रिसर्च की हालत उस पर आएगा, ठीक है। ओवर द लास्ट 75 years
Okay, those who are watching at in YouTube, you can download the article. Okay, it's pinned in comment section, not in comment, it's pinned in live chat. Okay. Over the past 75 years, the country has increased its arable area from 97.3 million hectare in 1950 to this much hectare. ठीक है, हेक्टेयर याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, बट आपको पता बस होना चाहिए कि we have already increased our arable area significantly. Okay, arable area के सेंस में we are stopping on this line because again it's important, and again UPSC have already asked question I think in 2020 or 2021, I am not exactly sure, मैं लिखा नहीं, ठीक है, in 2020 or 2021 UPSC have asked question that whether India's arable area is more than China, मतलब चाइना से कम है या ज़्यादा है, ठीक है, ये 2021 में शायद या 2022 में एग्जैक्ट श्योर नहीं है, वहाँ ये पूछा था, ठीक है। तो एरेबल एरिया जो है नंबर 1 और नंबर 2 यूएसए एंड इंडिया है, ठीक है। दे कीप ऑन शिफ्टिंग, कहीं आपको यूएसए नंबर 1 दिखेगा, कहीं आपको इंडिया नंबर 1 दिखेगा, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, उनका नंबर बहुत क्लोज है, थोड़ा बहुत अगर कभी इंडिया का थोड़ा बढ़ गया तो इंडिया नंबर 1 हो जाता है, नहीं तो यूएसए। ओके, तो फर्स्ट 2 ये दो जो है फिक्स है, ठीक है, ये आपस में गेम खेलते हैं, बट 1 and 2 इज यूएसए एंड इंडिया। उसके बाद थर्ड पर रसिया है, फोर्थ पर चाइना है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 3 रसिया इज बिग। ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेटा, ठीक है, कि कितना एरिया का डिफरेंस है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट एरेबल एरिया के टर्म में रैंकिंग लिख लीजिए। ओके, you can write it in your notes. Number 1 is USA, number 2 is India, number 3 Russia, number 4 is China. Okay, तो again mostly इंडिया के कंपैरिजन में पूछेगा, तो यहाँ पूछ चुका है। और सेकंड ये कि कभी हो सकता है कि मे बी यूपीएससी प्रीलिम्स में ये बोल दे कि एरेबल एरिया जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऐसे करके, तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एरेबल एरिया। ओके, and this increase is an increase of 0.47% per annum. So from 1950 to 2023-24, India's arable area have increased at the rate of 0.47% per annum. Now this data you should write in your notebook. This data you can use in your mains examination. ठीक है, mains examination में you have to remember such kind of data which you can easily remember. अब ये जो मिलियन हेक्टेयर वाला जो डेटा है, इस टाइप का डेटा याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है, बट अगर आपको 0.47% पर एनम वाला है, इट्स इजी टू रिमेंबर, क्योंकि वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। तो एरेबल एरिया इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.47% पर एनम, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज अगर हम यहाँ लिखें इज 0.47% पर एनम। ओके, दिस इज इंक्रीज इन एरिया। Now if you will see, on the other hand, food grain production has risen by a factor of 6, okay, from 50 point, again हम numbers को ignore कर रहे हैं, million ton to million ton, an average annual increase of 7.85% compared to an average area increase of 0.47%. Okay, so arable area increase was 0.47%, while at the same time एवरेज ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज है वो इंक्रीज हुआ है 7.85% से। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब वी हैव सीन एट द बिगिनिंग कि इफ यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन यू कैन इंक्रीज इट बाय 2 ways, right. So we can see here that arable area have increased only by 0.47% per annum, right? तो अगर arable area 0.47% per annum से बढ़ रहा है, but food grain production 4.87% per annum से बढ़ रहा है, that means some other factor is also working apart from arable area, and that is increasing productivity. Okay, तो आपको ये दो डेटा आपको ध्यान में रहना चाहिए, okay, कि whenever you have to put forward this point कि agriculture research is important, this is one way you can do that. Okay, okay, undoubtedly the productivity gains were a result of painstaking research in developing high yielding variety seeds coupled with expansion of irrigation,
मैकेनाइजेशन एंड अदर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। ओके, तो व्हाई यहाँ पर अगेन this para is also very dense para. Very dense para means from here again direct question can be asked, okay, and you have to write it in 250 words or 150 words, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत dense para है। तो why agriculture production increased since independence, ठीक है। तो उसके आंसर जो है वो यहाँ पर इस पारा में आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ से आपको मे बी वो ये नहीं पूछेगा कि व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, मे बी वो बोलेगा कि व्हाई इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट द पेस वी डिजायर, कि हम जिस पेस में चाहते हैं उस पेस में क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगेन जो जो पॉइंट्स डाला हुआ है आप उसका उल्टा बोल दो, ठीक है, कि आपके पास नहीं होगा। तो द मोमेंट इफ यू विल लिंक थिंग्स, तो देन यू विल हैव टू रिमेंबर लेस नंबर ऑफ थिंग्स एंड यू कैन राइट मोर थिंग्स, ठीक है। दैट्स दैट, ओके। तो अनडाउटेबली द प्रोडक्टिविटी गेन जो आपको अभी दिखा है 7.8% का, वेयर रिजल्ट ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का था, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज का हो गया, ठीक है। मैकेनाइजेशन, ठीक है, यूज ऑफ मशीन्स सो दैट योर labor output will improve if you will use machine, okay, and other technological inputs. The green revolution is a classic example of technology led transformation of agricultural production and a new paradigm of research based institutional support. ये वाला जो लाइन है, green revolution is a classic example of technology led transformation, ठीक है, यहाँ तक का this is very, मतलब ये एक पंच लाइन है। at times आपको एग्जाम में कंक्लूजन में पंच लाइन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी जब आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे में आपको कभी कभी पंच लाइन की जरूरत पड़ती है, जहां पर कि आप अपने पॉइंट को फोर्सफुली बोलते हो, ओके। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ लाइन, ओके। मतलब थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है बट वो एग्जामिनर का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेनेवर यू आर एडवोकेटिंग कि वी शुड यूज टेक्नोलॉजी, चाहे एग्रीकल्चर का हो या ना हो, बीट वाटर टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनीवेयर यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एंड देन देयर यू कैन यूज दिस पॉइंट कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ क्लासिक एग्जांपल, ओके। इंडिया वाज ऑलमोस्ट सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये आप उसको अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फिफ्थ पारा वाज अबाउट कि व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इट सेड दैट टेक्नोलॉजी वाज इंपॉर्टेंट। इसके बाद से अब जो भी अगला आर्टिकल है उसमें वो दिखाने का कोशिश करेगा ऑथर कि वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर रिसर्च पोटेंशियल, कि हम रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट ऑथर विल से, ओके। ए रिसेंट एम्पिरिकल स्टडी बाय ICAR NIA EPR, ये भी यही दिल्ली में ही है, पूसा रोड पर है, ओके, points out that payoff to investment in agriculture research and extension are quite significant. Why we should invest in research? अब इस पॉइंट का ये आंसर दे रहा है कि ये तो कोई भी बोल देगा कि रिसर्च आप इन्वेस्ट करोगे रिसर्च में तो आपको आउटपुट ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगा, बट कितना ज़्यादा आएगा, यू नीड सम पॉइंट टू से। तो उसका पॉइंट ये बोल रहा है कि स्टडी रिवील्स दैट एवरी रुपी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च पेड बैक 13.85 rupees, okay. Now this is important data, it should be there in your notebook, okay. आपके notes में ये data होना चाहिए, okay. You can just write it like this, that 1 rupee investment on agri research leads to ₹13 outcome, ठीक है। 13 पॉइंट जो है 0.85 उतना एक्यूरेट रहने की जरूरत नहीं है, अबाउट 13 रुपीज आप बोल देंगे, आपका काम चल जाएगा, ओके। दैट मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 रुपी इन एग्रीकल्चर रिसर्च यू आर गेटिंग प्रोडक्ट वर्थ 13 रुपीज, ठीक है। तो ये डेटा आपको यूज में आएगा जब आप व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू से कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। और नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, सब में आपको इस तरह का डेटा मिलेगा कि 1 रुपया खर्च करने से कितना, ओके, आपको आउटपुट कितना आ रहा है।
ऑन एक्सटेंशन, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं ये वाला पार्ट क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, which is much higher than the other sectors of the economy. If you are investing 1 rupee in agriculture research, you are getting 13.85 rupees, okay? But this kind of output is not available in other areas of investment, ठीक है? For example, अगर आप सब्सिडी देते हो, ऐसे बेसिक ऐसे पीएम किसान सब्सिडी दे दी, okay? Of course, subsidy is important, particularly to the poor, small and marginal farmer. You have to give subsidy to help them to survive, okay? But if you want long-term solution, if you want to empower farmers, then more than subsidy, you have to invest on agriculture research, ठीक है? नहीं तो क्या हो गया कि आप किसान को अपने ऊपर में डिपेंडेंट बनाए रख रहे हो, ओके? वो पहले की राजा महाराजा वाली बात हो गई कि आप इकोनॉमी सुधार नहीं रहे हो, कोई दिक्कत में है तो ये लो पैसा लो, ठीक है? तो वो आप पर डिपेंडेंट है, वो आपको माई बाप समझ रहा है, ठीक है? और आपको उससे जो भी फायदा चाहिए वो आपको मिल रहा है, ओके? बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज आप उस पैसा को, जो पैसा को आप सब्सिडी में दे रहे हो, उस पैसा का अगर एक फ्रैक्शन आप रिसर्च में यूज करोगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स बिकॉज दे विल गेन मोर, ओके, व्हिच इज मच हायर देन द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ये आरबीआई स्टडी, एंड अब फिर से दो स्टडी बोल रहा है कि आपको अगर आईसीएआर के रिसर्च पर आपको शक लग रहा है तो आरबीआई ने भी 2008 में यही बात बोली है कि आरबीआई स्टडी इन 2008 confirmed a similar outcome with regard to investment in agri research, okay, कि सेम रिटर्न ऑफ 13.45 रुपीज, ठीक है? तो आरबीआई रिसर्च में बोल रहा है कि अगर आप इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 rupee इन एग्री रिसर्च, इट विल गिव यू 13 rupees और मोर, ओके? सो दैट इज अगेन, सो दिस इज टेलिंग यू that go and invest in agri research. The RBI also noted that investment in agriculture research, education and rural infrastructure is often the most effective in promoting agriculture growth and poverty reduction. Till now we were talking about this, that if you will invest 1 rupee, it will give you 13 rupees. Yes, but RBI is also saying that if you want to reduce poverty, then also one of the best ways to reduce poverty is to increase investment in agriculture research. Why? Because generally poverty level is very high in rural areas, okay? People in rural areas are mainly dependent on agriculture, okay, be it landed farmers or be it landless farmers, okay? There are many people in rural areas who do not have land but they work on other people's field, उनको वहां से पैसा आता है, ठीक है? तो इफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, पॉवर्टी रेट विल डिक्लाइन क्विकली. तो ये एक रिलेशन जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि इफ यू हैव टू रिड्यूस पॉवर्टी then the fastest way is to increase agricultural productivity. And how you will increase agricultural productivity? By investing in research, ठीक है? तो this again is an important point, okay? जस्ट ये खत्म हो जाएगा तो मे बी आई विल डिक्टेट, बट ये चीज़ जो है आपके नोट्स में अगेन होना चाहिए, ठीक है? ये लिंकेज जो है कि प्रोडक्टिविटी का पॉवर्टी का जो एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ लिंकेज है, ओके, दिस लिंकेज यू शुड रिमेंबर एंड देन यू कैन कोट. नहीं तो सब लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी कैसे घटाया जाए, तो किसान को जो दिया जा रहा है, लोगों को जो दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स पीपल राइट, बट दिस लिंकेज इज यूनिक लिंकेज, ओके? तो इस पैराग्राफ के बाद इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, ओके, इसमें देयर इज नो डाउट. इसके बाद बोल रहा है अब दे आर टॉकिंग अबाउट कि स्टेटस क्या है. However, the pace and pattern of investment in agriculture have been grossly skewed towards welfare schemes in the last 2 decades. In last 2 decades, if you see, we'll see that the investment in welfare schemes related to agriculture have increased, okay? Like say PM Kisan Yojana या फिर सस्ता में लोन देना और फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, okay? तो this is agriculture related welfare schemes, okay, which of course do help, but problem ये है कि you have only so much money, आपके पास limited amount पैसा का है. RBI पैसा छाप सकता है, RBI can print money, but the problem is that will lead to inflation, okay? तो RBI cannot print endless money, that means government have only limited money supply. अब उस पैसा में आपके पास 2 ऑप्शन है, either तो you invest more on
subsidies, welfare schemes, or you invest more on agriculture research. Okay. Problem is people start defending subsidies because they say farmers are poor, money have to be given to them, or else how they will survive. They are very, it's a very strong point. Of course, if somebody is dying, you cannot say कि पहले research में पैसा खर्च करो, पहले उसको खाना दो. There is no doubt in that. Okay, but the problem is कि आप फिर targeted intervention करो. You give targeted subsidies. You give subsidies to that section of rural people or poor people, those who actually need it to survive. Beyond that, invest money on research because this will give you long term yield. ठीक है, बाकी तो नहीं तो आपको सब्सिडी तो इस साल दिए हो, अगले साल फिर से देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो बेटर फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इन्वेस्ट हियर. एंड इन लास्ट 2 decades, investment on welfare schemes have increased. Okay. Not only has the magnitude of investment in agriculture welfare scheme skyrocketed, but the ratio of investment in welfare to agri research has increased from 4:1 to 15:1. Now this data is important. This data is saying that between 2013-14 and 2024-25, okay, so in this time 2013-14, 2024-25, between this time, the ratio of investment on agriculture research and ratio of investment on welfare schemes have gone down substantially. तो अगर 15 रुपया सब्सिडी में खर्च हो रहा है वेलफेयर स्कीम्स में, तो 1 रुपया खर्च हो रहा है इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च में. तो 15 rupees on welfare schemes, 1 rupees on research. तो that is a major problem. ठीक है, तो ये बहुत ही skewed है, इसको चेंज होना चाहिए. Okay, so that's one data point. Okay, now again इसमें ठीक है, we will skip this part. इसमें बहुत सारा डेटा है जिसका कि उतना जरूरत नहीं है. Okay, this point also says same thing कि our investment on Department of Agriculture and Farmer Welfare, ठीक है, welfare related things पर हमारा investment जो है वो 450% बढ़ा है. Okay, between this time 2013-14 and 2023-24. But our investment on agriculture research and education have increased only 90%. So if you will compare welfare schemes में we have increased investment 450%, while here we have increased it only by 90%. Okay. The current allocation of resource for agriculture research is barely 8% of budget allocated. Okay. The total budget जो है उसका बस 8% we are investing it on that. Okay. So all these things total ये पूरा का ये है कि inadequate research investment. And then government is saying that there is draconian, sorry, not government is saying, author is saying that there is draconian laws. Okay, so there is draconian laws. Okay, so there are lots of laws. The piling of application for the approval of pesticides, biostimulants and biotech traits, and excessive focus on traditional production practices will do more harm than the good. Now author is showing authors on biases. Okay, now author is telling you that he prefers modern agriculture practices over other agriculture or over traditional agriculture practices. Okay, that is the viewpoint of author. Author बोल रहे हैं कि we should promote modern agricultural practices, not so much we should focus on traditional practices. Okay, again this is author's view. I am repeating it time and again because there is a section of experts who says that we should go back to natural farming. Okay, so that तो वैसे वाले भी हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग में इन्वेस्ट करो, बट ऑथर का कहना है कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस पर जाना चाहिए. बट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे नियम कानून बनाती है जो कि फर्टिलाइजर यूज को डिस्करेज कर रही है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जिस कारण से कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको कम इंसेंटिव है इन्वेस्ट करने के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस the modern agricultural practices is not taking roots. Okay,
Agriculture needs to unshackle from the clutches of two draconian laws, Essential Commodities Act and Fertilizer Control Order. The two things, Essential Commodity Act and Fertilizer Control Order 1985, author is saying that these two laws should be reformed. या तो हटा दो या रिफॉर्म कर दो. Essential Commodity Act का देखे ही कि it puts the ceiling, ठीक है, कि maximum storage limit set कर देता है, and that is not good for agricultural commerce. Okay. And the second is Fertilizer Control Order. It again puts limit on price of fertilizer, which again is not good for fertilizer commerce. तो author is of view कि ये दोनों हटना चाहिए. Okay. Sooner or later, India need to revitalize the scientific community and break the plague ceremony culture of running R&D institutions. Okay. So R&D institutions should be taken very seriously. R&D institutions should not be such कि बस उद्घाटन कर दिया, inauguration हो गया and then you are leaving it at that. ऐसा नहीं होना चाहिए. India should take R&D seriously. Okay, that is the whole goal. Need of the hour is to at least double public sector investment in agriculture research. Currently, India is investing 0.7% of agri GDP on agri research. Okay, India is investing only 0.7% of agri GDP on agri research. तो ये एक बड़ा point है. So people are saying that, experts are saying that it should increase to at least 1% of agri GDP. At least इतना तो increase हो ही जाना चाहिए. Okay. Reversing the current trend and ensuring food security can be achieved only by designing and developing projects in mission mode in priority area of food, feed, fiber and fuel. So India should start investing in research related to food, feed, fiber and fuel in coordination with multidisciplinary team across R&D institutions. Okay. So this is about key, we have to invest more. Now quickly, I think you should write few points. Okay. Just write two points. अगर आप पहले लिख लिए हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं लिखे हैं तो you should quickly write it. ठीक है. Need of okay, these data must be there in your notebook. That's why I'm writing it. Importance of agri research. Okay, rupee 1 invested leads to more than rupee 13 output. Okay, this is by ICAR and RBI. Okay, so whenever you have to justify कि government should invest more, you can write it here. Okay, कि government को agriculture research में more invest करना चाहिए, आप ये वाला point बोल दो, आपका काम हो गया. Second is कि current status of, whenever you want to say कि India is not investing enough in agriculture research, you have this point. Okay, कि 0.7% only India is investing only 0.7% of agri GDP on agri research. Okay, it is more than 2% in China and USA. Okay, तो ये point जो है आपको पता होना चाहिए. Okay, so this was about this topic. Okay, and then the second topic we will see, transforming India into a global manufacturing powerhouse. Okay, transforming India into a global manufacturing powerhouse. Go back to the second. Okay, next article. Okay, this article is relatively easy to understand. We'll quickly finish it off. Okay,
transforming India into a global manufacturing powerhouse. Okay. See, whenever you are talking about manufacturing, okay, there are two things. Agriculture, anybody have any idea? You know, there's two things, GDP and employment. Okay. Whenever economic growth is happening, we want two things out of economic growth, right? आप क्या चाहते हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, you want more production, because if more things will be produced, you will be able to consume more, okay, or more people will be able to buy, okay, so living standard may increase, okay. That is the whole idea behind increasing GDP, right? So increasing GDP means increasing production. Like India's GDP is increasing, yes, it is very good thing because we are producing more. But at the same time, we also want to increase employment, right? Because unless employment will increase, how people will get money and how they will buy things. Just because somebody is producing does not mean that you will get it. You need money, okay? And for that you need employment, right? So even economically speaking, at least, need for employment goes beyond just money, ठीक है? पैसा के beyond भी लोग काम इसलिए भी करना चाहते हैं कि they can do something, they can feel proud of themselves कि यार मैंने ये काम कर दिया, ठीक है? तो वो सब भी चीज़ है, बाकी social psychological aspect भी है work का. But one very important aspect of work is कि it helps you sustain yourself, okay? It helps you improve your living standard, okay? तो GDP बढ़ना चाहिए, but at the same time employment should also increase, okay? One of the major problems with Indian economy is that GDP have been increasing, okay, but the growth in employment has not been proportionate, ठीक है? तो GDP बढ़ता रहा, but employment में उतना growth नहीं हुआ जितना होना चाहिए, okay? So that is one big problem, okay? There is term called, write this term, okay, employment elasticity of growth. Okay, write this term, employment elasticity of growth. If economic growth, yeah, if GDP will grow by 1%, okay, by what percent employment will increase? Let's say कि GDP increased by 1%, okay, 1% increase in GDP. Employment increased by what percent? तो ये जो है, this we call it employment elasticity of growth, okay? Let's say कि GDP is increasing at 1% and employment is increasing at, for example, let's say 0.1%, okay? Two cases. Case 1, GDP is increasing at 1% and employment is increasing at 0.1%, okay? Case B, GDP is increasing at, let's say, GDP is increasing at 0.9%, but employment is also increasing at 0.5%. Which case is good? Case A and case B, which one you will prefer? Between case A and case B, which case you will prefer? Right? So you will prefer case B because you want a balance, right? You want balance. You don't want कि GDP बहुत तेजी से grow करे, but employment हो ही नहीं. Okay, right? So here, so you can write this employment elasticity of growth. Employment elasticity of growth means percentage change in employment. You write this thing because it can be asked in prelims examination. Okay, which of the following best describe employment elasticity of growth? Employment elasticity of growth means percentage change in employment. Write it down. Percentage change in employment because of 1% change in GDP. Okay, so if GDP increased by 1%, by what employment increased? Okay, tell me one more thing, that
high employment elasticity of growth is good or low employment elasticity of growth is good? You want what? You want employment elasticity of growth to be high or low? Okay, definition is employment elasticity of growth means percentage increase in employment because of 1% increase in GDP. ठीक है, percentage increase in employment because of 1% increase in GDP. Okay, so the whole point is that we have to transform India. Okay, so recently GDP has been increasing, but employment has not been increasing. We call it a phase of jobless growth. You must have heard about jobless growth, कि GDP बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है. Okay, how to create employment? When we say okay, sector and employment, if you see, okay, sector and employment. Okay, normally we will not talk about agriculture sector because in agriculture we have already more than required people employed. Okay, so we cannot say that agriculture sector should generate more jobs. हमारा population बढ़ रहा है, we need to create more jobs, right? There is no dispute in that कि India need to create jobs. ठीक है, but वो नए jobs कहाँ से आएंगे? We know that there are three sectors of the economy: agriculture and allied sector, which we call it primary, then secondary sector, which has industries, and the tertiary sector, which is services sector, right? Agriculture sector is already overcrowded. Okay, already more than 40% of India's population is there in agriculture. So government is taking steps to reduce percentage of people employed in agriculture. Okay, तो agriculture की तो बात ही नहीं करेंगे. न्यू जॉब्स जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं जा रहा है. ओके, मतलब हम उसको करेंगे तो दैट विल बी बैड. ओके, बिकॉज फिर लोगों को सैलरी कम ही होगा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी लो है. तो हमारे पास बचा दो सेक्टर. ओके, आइदर तो वी कैन क्रिएट जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वी कैन क्रिएट जॉब्स इन सर्विसेज सेक्टर, और बोथ. ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वी नीड टू क्रिएट जॉब्स इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर. But out of these two sectors, which sector has more potential to create growth, create jobs? कौन से सेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जॉब क्रिएट करने का? Okay, तो of course there are some experts which says that India should focus on services. Okay, like say Raghuram Rajan nowadays. So Raghuram Rajan is saying that yes, manufacturing can create jobs, but India should focus more on services. Okay, but that is Raghuram Rajan's view. Okay, so he is saying that because services sector have higher productivity. Okay, but majority of experts are of the view कि हमारे जो लोग हैं उनके लिए जॉब सबसे ज्यादा क्रिएट कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Why so? Because people says that our population is still largely unskilled. Okay, and services sector in general demands skilled people, particularly जो high end services हैं, they demand skilled people. Okay, but our population is largely unskilled, semi skilled. तो manufacturing sector is one of the prominent sector which can create jobs. Okay, for our people. Okay, तो ये जो है sector and employment, तो manufacturing sector has high potential to create jobs for unskilled and semi-skilled workforce also. Okay, तो ये एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ.
इलास्टिसिटी और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा हाई है. तो हमारा तो ऑथर इज now we will start reading this article. Author is of the view that we should focus more on manufacturing. ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए what steps we have to take, that author will talk about it. Okay, so now and we will cover this article relatively quickly, थोड़ा ज़्यादा तेजी से करेंगे. I'll just tell you important points. Okay, okay. See, in this whole article, how this article is going to flow, article का flow कैसा है. तो at first, in first para, author will tell you that India should increase the contribution of manufacturing in GDP, okay, because manufacturing can create jobs. Okay, why India need more jobs? Because India has demographic dividend. Okay, we have our youth population is about 27%. Okay, means about 27% of India's population is in 15 to 29 age group. ठीक है, तो आप लोग जिस एज ग्रुप में हो, you guys are in youth category. Okay, I am no longer youth. ठीक है, मैं यूथ कैटेगरी को पार कर चुका हूँ. ओके, तो आपका कैटेगरी जो है वो 15 to 29 एज ग्रुप, वी कॉल इट यूथ. तो 27% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन दैट according to national youth policy. Okay, or India's median age is also 29 years. Okay, about that means 50% of Indians are below 29 years. ठीक है, 50%. Okay, so that is another. Okay, कि median age जो है हमारा that is 29. 29 के नीचे 50% लोग हैं, 29 के ऊपर 50% लोग हैं. तो जितना पॉपुलेशन यंग होता है उतना उसको ज़्यादा जॉब्स चाहिए, उतना उसको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है. यंग पीपल दे नीड एजुकेशन, दे नीड हेल्थ केयर. ओके, एंड दे विल मैरी, दे विल रेज देयर ओन चिल्ड्रन. फॉर ऑल दीज थिंग्स दे नीड मनी. ओके, एंड फॉर मनी दे नीड जॉब. ओके, तो यूथ पॉपुलेशन जो है उसको जॉब चाहिए. एट द सेम टाइम फॉर कंट्री ऑल्सो, यूथ पॉपुलेशन, ए कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम यंग पॉपुलेशन only if a country can create job for them. ठीक है, तो अगर कंट्री उनके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगी तो फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो चला गया. और न बस अपॉर्चुनिटी गया, दैट कैन बिकम डेमोग्राफिक कर्स. बिकॉज इफ यू विल नॉट गिव जॉब्स टू यंग पीपल, what they will do? Okay, they will be facing poverty and all kind of things, and then they may create social problems. So if government want to deal with that social problems, government should create more jobs or the economy should create more jobs. तो ये basic overall फंडा है. And then उसके बाद इस आर्टिकल में author says कि one way to do it is to increase coordination between center and state. ठीक है, in India we have federal system, right? We have central government, we have state government. Okay, central government can make rules, can make laws, okay, but ultimately it needs to be implemented at local level. Okay, it needs to be implemented at district level and sub-district levels, and for that you need people who are reliable, people who are trustworthy, okay, and at the same time people who are respected by people. Okay, why they are required? So that they can coordinate, they can increase coordination between center and state. We have seen time and again कि हमारे यहाँ because of federal structure क्या होता है कि अगर यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बंगाल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो it becomes very difficult for center and state to coordinate. ठीक है, तो वो एक ईस्ट जा रहा है, दूसरा वेस्ट जा रहा है. Even though both want to create jobs, but there is lack of coordination. So that is a major problem. Okay. Okay. So we'll directly start from here. कि the center, there should be right person who will help in coordination between center and state. Okay. How that right person
will do what things, right person जिसको आप select करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए, हाँ नहीं थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद होगा, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको देखते हैं कि what steps that guy should take. Okay, तो one, okay, let me see. I just want to show you important points. Okay, flip the page, second page में policy formulation. Whoever will be the Sherpa means that guy who will do that job. Okay, the guy who will do the coordination. They should focus on MSME reforms, okay, and facilitate policy formulation, adoption, and implementation. Okay, so one of the ways in which manufacturing sector can be promoted is by focusing on MSME reforms. MSME sector should be incentivized. Why? Because MSME का मतलब हुआ जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो होते हैं कि कहीं पर लेथ मशीन लगा हुआ है या कहीं पर छोटे 10 करोड़ का ऐसे, okay, तो those sectors should be promoted, MSME reforms. Okay, then labor reforms or land related thing should also be promoted. Okay, infrastructure and logistics. Okay, infrastructure we have to improve because हमारा जो logistics cost है that is coming to about 13%. Okay, our logistics cost is about 13%. ठीक है, 13% हमारा logistics cost है, so we cannot, that is too much because globally it is around 5-6%. So if you want to make our industries, our manufacturers competitive, so what we have to do, we have to increase our investment in infrastructure, and we have to bring down our logistics cost to 8 to 9%. Okay, then we have to increase our investment in R&D. We have already said that only 0.7% of GDP is being invested in research and development in India. Okay, so manufacturing sector cannot compete with global producers unless they will have a state of art technology. How they will have a state of art technology? कहाँ से आएगा, कहाँ से? तो आपको focus करना पड़ेगा research पर. So we have to increase this. Okay, so now we'll conclude it. Okay, sorry, I will have to end the session quickly. Okay, because the problem is now we have another session. Okay, so from next week onwards there will be enough time for that, but today I will have to conclude it. Okay, तो second page जो है इस वाले का manufacturing powerhouse वाले का first page is not that important. Okay, first page ऐसे ही है, second page is full of points, so note that. Okay, and that's it. Okay, bye bye, all the best.